having a strategy. People don't consider is important. एक अगर यूनिट है तो उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं. If I say only with self study, I would be wrong. Hey everyone, welcome to my channel. My name is Nikita Sukhwani and I have been a gold medalist in my masters, and along with that I have qualified UGC net examination with JRF AIR 16 in June 2025. I have also qualified Gset examination in December 2024, and that was my first attempt when I appeared for Gset examination. Along with that, during this entire journey, when I was preparing for UGC NET examination, Gset examination, I have also got myself enrolled in PhD. So currently I am pursuing PhD, and today in this video, I am going to share with you that my strategy or the things that help me out to qualify UGC NET examination or Gset examination. Though I qualified Gset examination in my first attempt and I qualified UGC NET in my second attempt, but the strategy for both the examination was almost similar. So this video is going to be helpful to the people who are preparing for UGC NET or Gset examination. So let's get started. Okay, so before starting or moving forward towards the main video, let me give you a brief about UGC NET examination and Gset examination. See, if you are somebody who is willing to become an assistant professor or who is willing to be in this field of academics, this is the exam that you need to qualify. So UGC NET examination is national eligibility test, while Gset is a Gujarat state eligibility test. It means that if you qualify Gset examination or any set examination, you are eligible for becoming an assistant professor in that particular state, whichever the exam might be. Like I qualified Gset examination, so if in Gujarat state there are any vacancies of assistant professor, I am eligible for becoming an assistant professor. I am eligible for applying for that post. Okay, and if you are somebody who qualified UGC NET examination, then you are eligible for becoming an assistant professor in entire India. Okay, so this is the difference, that Gset is or any set examination is a state eligibility test, while NET examination is a national eligibility test. Okay, now let's get started with the main purpose of today's video, that how you go to qualify the Gset or UGC NET exam and what should be your strategy. Okay, so starting from the very basics, the first step that you need to do when you are preparing for this examination, or keep it that way, that any examination, if you are somebody who is preparing, the first important thing that you need to do is having a strategy. It's important. Like we ignore this thing and we do not consider it. We start preparing for the examination without thinking, okay, what is the direction I want to go in. Without having any strategy, we start preparing for paper 1, we start preparing for paper 2 without having any strategy कि मुझे कौन से यूनिट्स लेने हैं, कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है, कौन से यूट्यूब वीडियोस को मुझे प्रेफर करना है. विदाउट हैविंग एनी क्लैरिटी वी इग्नोर दिस थिंग. एंड आई थिंक strategy is something like commerce me, we study about postcard, right? In management we study about postcard. The first thing that you do when you are managing something is planning. Without planning, anything cannot be successful. Believe me, people don't consider is important, but no, you need to have a plan, that how are you going to work for this, because this exam is also one of your project. So you need to consider एक plan होना चाहिए, एक strategy, that how you are going to qualify this exam. Okay, so first of all, make this very clear, that what is your strategy and how you are going to work for this exam. Okay, now moving further, that what should be your next step? The second step that you should be doing is to get complete information about syllabus. Yes, to get complete detailed information about syllabus. Now here complete detail में मैं सिर्फ इतना नहीं बोल रही हूँ कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में 10 यूनिट है, सिर्फ इतना आइडिया नहीं होना चाहिए. No, that's not going to be helpful. See, when I started my journey, I did a mistake that for at least 10 to 15 days, I thought कि 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में 10 यूनिट्स है, तो for at least 10 to 15 डेज के लिए मैं सिर्फ उन यूनिट्स की वीडियोस देख रही थी और बुक्स में से रेफर कर रही थी. आई हैड नो आइडिया दैट व्हाट वर द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एनी यूनिट. आई नेवर कलेक्टेड इट फ्रॉम द वेबसाइट. आई नेवर thought of that you need to have that also.
बट इट्स इंपॉर्टेंट एंड आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक दैट फर्स्ट स्टेप आप क्या करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस जाके यूजीसी नेट की वेबसाइट से, और अदरवाइज सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेट की जीसेट की वेबसाइट से या जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके यू नीड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस. यू नीड टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस. एक अगर यूनिट है तो उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो उस यूनिट में है. यू नीड टू हैव एन आइडिया, बिकॉज अब अगर आप वो आप पढ़ लोगे कि इस यूनिट में ये चीजें हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें से व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस. इतना आपको आइडिया आएगा. सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही चीजों का आपको क्या करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू गेट, कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद देयर सब टॉपिक्स. ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू. Now coming to the second most important thing is, or I would say third most important thing is, that you need to decide on your sources. You need to be very clear with your sources. Now sources say, what do I mean? That either you are going to do it with self-study, you are going to prepare with your own self-study material, or either you are going to enroll in any batches. Have very clear idea. See, there is no shame or there is no kind of regret. If you are somebody who is not having time for self study, you can easily enroll for courses, and you can from that courses can help you to qualify this exam. See, it completely depends on you, that how much you are capable or how much you have that stamina or strength that you would be able to cope up with the examination. I qualified this examination with self-study, but if I say only with self-study, I would be wrong, because definitely I took the help of YouTube, free videos jitni bhi available, I took the help of YouTube videos. So completely saying a self-study would be wrong. So there is no shame in saying that. If you have done it, I'm very clear about it, that I took book materials and I also took YouTube videos material. So it's okay. It's completely dependent on you, that what is your strength and how you are going to use it for qualifying this examination. Okay, so the second thing, that be clear about the sources. Self study, if you are thinking of self study, तो इतना clarity रखो, self study करोगे तो material कौन सा use करोगे, because without material नहीं हो पाएगा एग्जाम क्वालिफाई. If you feel and if you believe that आपके पास जो मास्टर्स के बुक पढ़े हैं या आपके पास जो पहले ग्रेजुएशन के बुक्स पढ़े हैं, आप उसमें से पढ़ के ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे, so that's not going to be the case. You need to be clear about the material that you are going to use. कौन सी बुक्स आप प्रेफर करोगे उसके बारे में क्लैरिटी होना इज इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग टू प्रेफर द यूट्यूब वीडियोज, देन ऑल्सो यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि आप कौन सा यूट्यूब वीडियोज को प्रेफर करने वाले हो, कौन से चैनल्स को आप प्रेफर करने वाले हो. यू नीड टू बी अटमोस्ट श्योर, बिकॉज यू कैन नॉट बी गोइंग ऑन यूट्यूब एंड रैंडमली watching any video and randomly taking any book for preparation. That will not help you out for preparing for this examination. Okay, so personally speaking about me, when I started preparing for this examination, I took a combination of both the things, that I also got the material and I also used YouTube videos. And one suggestion that I would give over here is that keep the sources very limited. Limited in the sense, I believe that keep the sources very limited. That means if you are going to use any book material, keep it either 1 or 2. Don't make a bulk of 5 or 6 books material. That is not going to help you. And if you are somebody who is going to take the help of YouTube videos, then also keep it very simple and keep it 1 or 2 YouTube channels, whichever you find relevant or whichever you find you are understanding, usko rakho, and that much is enough for your preparation. Don't keep a bulk of YouTube videos or bulk of books material. No, keep it simple, short, and that is enough for qualifying this examination. Okay, now moving to the further step, try and analyze to get information about your strengths and weaknesses from the syllabus. See, when I started preparing for my exam, one mistake again I did was I started from unit 1. I think that didn't help me out, because unit 1 of commerce and paper 1 का unit 1 teaching aptitude है, paper 2 का जो commerce का जो specific है उसका जो unit है वो international business है, and I think both the units are not my strengths. No, when I started preparing for the exam, I felt hopeless. I felt that I couldn't be able to qualify this exam because I started from that units which were not my strength. So always start from the units that are your strength. Identify कौन से units आपके strength है. अगर मैं इसको पढ़ूंगी, I find it interesting and I would be able to attempt the questions, right? So it is important that you identify your strength, कि आपकी कौन सी units आपकी strength है, उनको पहले study करो, get completely done with that units, entire syllabus cover करो उस unit का, और I would say 90% उनका cover करो because they are your strength.
एंड देयर बाय आप आइडेंटिफाई करो आपकी वीकनेसेस क्या है. वीकनेसेस में सपोज अगर कुछ यूनिट्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करो कि आप प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, उनमें से ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो विच आर अपीयरिंग इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन, जिसके क्वेश्चंस है उन टॉपिक्स को साइड बाय निकाल के उन टॉपिक्स को स्टडी करो, एमसीक्यूज को स्टडी करो, एंड देयर यू विल बी डन विद दैट यूनिट. वो यूनिट आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगा. ओके जैसे मेरा फॉर एग्जांपल पेपर 1 आवर स्पीकिंग, हायर एजुकेशन वाज नॉट माय स्ट्रेंथ, टीचिंग एप्टीट्यूड नॉट माय स्ट्रेंथ, सो आई डिड वाज आई प्रैक्टिस्ड एमसीक्यू ऑफ दैट यूनिट फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स. फ्री यूट्यूब वीडियो से मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया था उससे, एंड अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम टॉपिक्स विच वर अगेन एंड अगेन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट आई prepared for that examination, and based on that I prepared for that particular unit. Okay, so in this way you can easily balance between the units that are very good for you and the units that are not good for you. Now the again a further thing that is useful is preparing notes, right? आप प्रिपेयर कर रहे हो यूनिट्स को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उसके ऊपर से आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली स्टार्ट मेकिंग नोट्स. डोंट वेट फॉर एनी गुड टाइम और डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग टू बी देयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स. दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. आपने यूनिट आज से स्टार्ट किया है, प्रॉपर नोट्स आपके उसके होने चाहिए. नाउ नोट्स से मैं क्या मतलब मान रही हूँ कि अगर सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आप पढ़ रहे हो, तो रिसर्च में आपने टाइप्स ऑफ का एक चार्ट बना दिया कि इतने इतने तरीके के रिसर्च होते हैं, एंड उसके सामने आपने कुछ पॉइंटर्स लगा दिए दैट आर हेल्पफुल. जब आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी. नोट्स शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. हमें पूरा आत्मकथा वहाँ पे नहीं लिखना है. वी नीड टू अवॉइड दैट थिंग्स. इट शुड बी सिंपल, to the point, so that in future when you are referring, so you can easily understand that what you have written. Okay, so that is the thing about the notes. Okay, so another question that arises in the mind of many students is that how many hours you need to dedicate for preparation of this examination. See, when I started preparing for this examination, there was a time period, I would say around 5 to 6 months. I had 5 to 6 months when I was appearing for my second attempt. Okay, I had 5 to 6 months, and rigorously I prepared for this examination was 6 hours. At least 6 hours I gave to this examination for preparation of this exam. I gave 6 hours. So if you are somebody who has that much amount of time period, like 5 to 6 months आपके पास है, so you need to give 6 to 7 hours daily, on daily basis, for preparing for this examination. And if you do not have that much amount of time, or you are on the very peak of the examination, like December में नेट का एग्जाम है, Gset का नवंबर में है, so this hours can vary. Like I still remember the last 1 month when I was going to appear in June 2025 for my attempt of UGC net. The last 1 month I gave 8 to 9 hours for the preparation of this exam. Like it was that much time period. So you need to have that much focus on this examination. Otherwise आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितना भी कोई आपको कह ले कि 30 डेज में कैसे क्वालिफाई करना है एग्जाम और 1 मंथ में कैसे करना है, it is not going to happen. Believe me, it's not going to happen. Either it be Gset or UGC net. इतना तो आपको इस एग्जाम को देना ही पड़ेगा टाइम पीरियड, इतना प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा. एंड व्हेन आई से 6 आवर्स, आई मीन दैट एटलीस्ट 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी. 1 hour you can go for YouTube videos, आप देख सकते हो explanation के regarding, but at least 5 hours of self study is important for this examination. Okay, now one more thing that I would like to again add on over here is whenever you are doing revision, now make sure that you are revising not again the topics आप revise कर रहे हो, but उसके साथ you make sure that you are also giving a mock test or also solving MCQs of that unit. आप पढ़ो उस टॉपिक को, अंडरस्टैंड करो, रिवाइज करो, बट उसके बाद कम टू द मेन पॉइंट, बिकॉज एट द एंड तो एग्जाम में जाके आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने पड़ेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एमसीक्यू पैटर्न पहले से ही अपने माइंड पे सेट करो कि आपने जितना भी पढ़ा है, try to solve MCQs of that particular unit. Okay, so that is important. And again, a question over here is, which I again experienced in my journey, was whether to solve MCQ from books, material और YouTube videos, कहाँ से सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा. सी, मैंने दोनों चीज़ों को देखा था, दोनों चीज़ें मैंने ट्राई की थी, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि विच थिंग इज़ मच फ्रूटफुल. I like got some books that had 15 years question papers of UGC net solved entirely,
एंड आई ऑल्सो रिफर टू यूट्यूब वीडियोज़. सो ज़्यादा बेनिफिशियल यूट्यूब वीडियोज़ थी. तो वो वीडियोज़ मुझे क्यों हेल्पफुल हुए? बिकॉज MCQ सॉल्व करने का भी एक पैटर्न होता है दैट यू सॉल्व अ क्वेश्चन एंड यू गेट द आंसर, बट यू आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन दैट आंसर बिकॉज यही क्वेश्चन नहीं आने वाला है. आपका पर्पस होना चाहिए MCQ सॉल्व करने का कि आप इस MCQ से जितने अदर जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस आपको दिए हो, उन ऑप्शंस को आप कंप्लीटली एनालाइज करो, उन टॉपिक्स को समझो, उस क्वेश्चन से टॉपिक्स को निकालो, समझो. अदर 3 MCQ क्यों गलत है उस चीज़ को भी समझना इज इम्पॉर्टेंट. MCQ सॉल्व करना मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देख लिया, दैट इज नॉट सॉल्विंग. बट जो अदर 3 ऑप्शंस गलत गए हैं उनके बारे में पढ़ो, उस टॉपिक्स के बारे में पढ़ो. दैट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग MCQ. देन ओनली यू कैन से कि आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं. ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो उस चीज़ को माइंड में ध्यान रखना है कि आप MCQ प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, रादर देन जस्ट गिविंग इट कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर देख लिया. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड कि यू आर प्रैक्टिसिंग इन राइट वे एंड फ्रॉम राइट प्लेटफॉर्म. If you find comfortable with books or hard copies, so you can definitely refer to that. For me, YouTube videos were much helpful, so I refer to that videos for solving MCQs. And yeah, that's it. In this way, I think these all pointers were helpful for me for qualifying this examination. And I hope that whatever things I shared with you, that might be fruitful and might be helpful for your journey for UGC NET examination. So thank you so much for watching my video, and thank you so much for giving your time to this video.